Hello students, Nikhil this side. In this lecture, we are going to study about two mathematical instructions which are adding and subtracting. So let's get started. So in this lecture, we will be covering these topics. First one is what are addition and subtraction instructions, types of addition and subtraction instructions, examples of addition and subtraction instructions, performance, consideration, and in the last, uh, we will be getting conclusion. Okay, so so uh, welcome to the world of microprocessors, where complex computations are performed at lightning speed. In this presentation, we will be discussing one of the fundamental operations that microprocessors perform: addition and subtraction. Uh, Addition and subtraction instructions are essential building blocks for many programs that run on microprocessors. Whether you are working on a simple calculator or a sophisticated gaming console, you will need to use these instructions to perform basic arithmetic operations. Uh, what are addition and subtraction instructions? Addition and subtraction instructions are machine level instructions that allow microprocessors to perform mathematical operations. These instructions are used to add or subtract two numbers and store the result in a register. So basically क्या होता है इसमें, कोई भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं दो नंबरों का, ठीक है, किसी भी टू नंबर्स का अगर हम जब करेंगे तो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर को कि वो कैसे इसको ऐड करे और उसको कहाँ फिर स्टोर करे. So microprocessors use binary arithmetic to perform these operations. Binary arithmetic is a system of arithmetic that uses only two digits, 0 and 1. Each digit represents a bit, which is the smallest unit of information that a computer can store. Okay. सो नाउ अभी हम देखेंगे इसके टाइप क्या क्या है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन के टाइप, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस instructions that are commonly used in microprocessors. The most basic type of instruction is the add instruction, which adds two numbers together and stores the result in a register. ओके, सो ऐड यहाँ पर क्या कर रहा है, बेसिकली टू नंबर्स को ऐड कर रहा है और फिर स्टोर कर रहा है उसको रजिस्टर में. अदर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्लूड सब्ट्रैक्ट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शंस. सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शंस subtract one number from another and store the result in a register. Increment and decrement instructions add or subtract one from a register respectively. Okay. Examples of addition and subtraction instructions. Let's take a look at some examples of how addition and subtraction instructions are used in microprocessors. In the following example, we will add two numbers together and store the result in a register. So add R1, R2, R3 adds the contents of register R2 and R3 and stores the result in R1. सो हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ये उसका एक सिंटैक्स है. हमने ऐड किया R2 और R3 को और उसको स्टोर कहाँ पे किया हमने R1 में. ओके, मतलब ये हमारे रजिस्टर्स हैं R1, R2, R3 और R2 में कोई वैल्यू पड़ी है हमारी, सपोज हमने वहाँ पर लिख रखा है 2 या फिर 2 कोई वैल्यू पड़ी है और R3 में कोई 3 कोई वैल्यू पड़ी है, तो हमने 3 + 2 करके उसको R1 रजिस्टर में डाल दिया विच इज़ 5. ओके. सो परफॉर्मेंस कंसिडरेशन अभी हम इसका देखेंगे. तो व्हेन यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन इन माइक्रोप्रोसेसर्स, there are several performance consideration that need to be taken into account. One of the most important consideration is the number of clock cycles required to perform the operation. नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स आप लोग को पता होगा, कोई भी जब हम प्रोग्राम रन करते हैं या फिर कोई भी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट
क्लॉक साइकिल्स होती हैं जिन पे वर्क करता है. ओके, सो अनदर कंसिडरेशन इज द साइज ऑफ द ऑपरेंड्स. Microprocessors have limited amounts of memory, so it is important to use the smallest possible data type for each operand. लाइक हमने अभी हम सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि फ्लोट यूज़ करते हैं, इंट यूज़ करते हैं, है ना, बुलियन यूज़ करते हैं. तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि मेमोरी को हम सेव करना चाहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेटा टाइप का यूज़ करें. दिस कैन हेल्प टू कंजर्व मेमोरी एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस. ओके, सो कंक्लूजन क्या है इसका? In conclusion, addition subtraction instructions are fundamental operations that are used in many programs that run on microprocessors. These instructions allow microprocessors to perform basic arithmetic operations quickly and efficiently. By understanding the different types of instructions and the performance consideration that need to be taken into account, you can write more efficient and effective programs for microprocessors. Okay, so thank you for listening.